हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे आई एम बैक इन कोरापुट। आज कोरापुट में हम लोग आ गए और इधर एक डे कैंपिंग करेंगे। हम लोग NH26 के बगल में एक कैनाल का साइड में आ गया। थोड़ा सा आज लंच करेंगे यहाँ पर। घर में बैठ के क्या करें, सो वी हैव ब्रॉट ऑल आवर सेटअप एंड दिस इज़ द प्लेस। You can see there goes the NH26 and there is the railway line that goes from Koraput to Raigada. So this is the place where we will do our cooking. So we'll prepare pakhala, that famous Odisha dish, and this is an ideal dish during hot summer days. I'll show you how to prepare it. Cooked rice में पानी दे दिया हम लोगों ने. Now break the rice mound. We'll apply some curd. Normally the rice we prepare what we call panta bhat in Bengal. Add little more water. Actually, the utensil has been too small to fry a papad of this size. Okay, still so much of preparation. Potatoes, smashed potatoes, garden egg fry और उसके साथ साउथ स्टाइल पापड़. तो गार्डन एग भी फ्राई कर लिए इस छोटा गैस में. थोड़ा रिस्की है ये छोटा गैस. So the food is ready. उड़ीसा में है और उड़ीसा का डिश नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा. यही है उड़ीसा का पखाला. Yes. Last time you prepared it, but it was not that authentic. But this time it's purely authentic one. So let's try how it tastes. Today we have prepared in a different way, in the authentic style. It's really tasty. Definitely it's worth trying.